Now, Indore, India's cleanest city, is currently reeling from a devastating water contamination crisis. The tragedy began on Christmas Day, with reports of foul-smelling tap water, has now eventually claimed 14 lives, including a 5-month-old infant. Over 150 residents are battling for their lives in hospitals as we speak. Investigations have revealed a leaking pipeline beneath a public toilet allowed sewage to seep into the water supply. The state government has suspended 3 officials and dismissed 1, seeking accountability. Shockingly, top sources in the Indore Municipal Corporation have revealed that a file to lay a new Narmada water pipeline was prepared in November last year, but in fact in November of 2024, but the work order was only passed on December 26, 2025, just as the outbreak was reported. On that note, the lab report has confirmed contamination. Here's what it states: that there was a diarrhea outbreak caused by water contamination. At the same time, it also, in fact, apart from highlighting the fact that there was a diarrhea outbreak, it says that disease-causing bacteria have actually been confirmed to have been found in the drinking water sample that had been submitted. Vibrio cholerae or Shigella, which is the E. coli bacteria, which has been found in this water sample. At the same time, samples taken from drinking water supplied to homes. This was the water with these bacteria that was actually being supplied, shockingly enough. The report also prepared by Indore's MGM Medical College. And with that, let's also bring you some reactions before we get you, in fact, ground report as far as Indore is concerned. बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया। नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है, जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो यही नॉर्मली सोचते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अपना क्लिनिक है यहाँ पर, डॉक्टर सिरोंज करके है, 3 पुलिया पे है, उनको ही दिखाया था हमने। उन्होंने मेडिसिन, बच्चे का चेकअप वेकअप करा था और मेडिसिन लिख के दे दी थी। चूक तो हुई है, आपने कई बार माना और आपने कहा है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जांच चल रही है। चूक तो ही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और चूँकि हम सरकार में, तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता की। देखिए, वहाँ पर एक बड़ा जो मिक्सिंग का था ड्रेनेज का, वो पॉइंट तो मिल गया है, पर अभी हो सकता है, संभावना है कि छोटे और हो। तो अभी हमने पीने के लिए मना किया है पानी, हमने नर्मदा का पानी बंद कर दिया था, आज से हम चालू कर रहे हैं, और फिर हमने अनाउंसमेंट कर दिया ये सिर्फ सैंपल टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, आप इस पानी का उपयोग नहीं करें। पानी पीने के लिए टैंकर से आप पानी लें, और वहाँ हमने 50 टैंकर खड़े कर दिए, लोग उसका ही पानी पी रहे हैं। अब ये जो पानी बहेगा पाइपलाइन में से, वहाँ हम रैंडम जगह जगह चेकिंग करेंगे पानी की। एक आखिरी सवाल, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग संक्रमित हुए, और मौत का कितना अभी तक संख्या, मौतों की संख्या कितनी हुई? ये 1400-1500 लोग करीब आंकड़ा है जो इससे प्रभावित हुए थे। उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिसमें 60-70 लोग डिस्चार्ज हो गए। मुझे लगता है कि 150 संख्या होगी जो हॉस्पिटल में है जी। और वो हमारे लोग, हमने हर हॉस्पिटल के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक हेल्थ विभाग का अधिकारी वहाँ बैठा दिया, जो प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर है जी। आईसीयू में मेरा ख्याल 13-14 लोग हैं, पर सब आउट ऑफ डेंजर है। नहीं, जांच दल तो 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगा। 2 नगरीय प्रशासन मंत्री उसमें डाले गए हैं। अभी कुछ नहीं दिखता, एक बात दिखती है कि 13 लोगों की मौत हुई और जहरीले पानी से हुई है, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो नगर निगम महापौर और वो कर्मचारी अमला है, उसको इसी वक्त FIR होनी चाहिए उस पर। ये मोहन यादव नहीं करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी। अमृत योजना में या अलग अलग देश की योजनाओं के अंतर्गत साल के 1000 करोड़ रुपए पानी की व्यवस्था को लेके आते हैं, फिर भी करप्शन हो जाता है। कि जो मंत्री है नगरीय प्रशासन, उनकी विधानसभा का यह हाल है, तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा? और
Correct. Now, according to the highly placed sources in the Indore Municipal Corporation, more than a year before the outbreak, a file had been prepared for laying a new Narmada water pipeline. Let's bring you all the facts and figures over here. Such has been the shocking delay which has led to this health emergency in Indore. The file for replacing pipeline was in fact prepared on 12th of November 2024. Secondly, the plan prepared after spot checking that was done by senior officials who in fact confirmed the fact that there was a replacement for the pipelines that was required. After much delay, the tender was in fact eventually floated on 30th of July last year in 2025. There was a work order for the pipeline which was also passed on 26th of December 2025. The work order was issued after deaths were reported. That in itself is the big question. Why? What were authorities waiting for? The area corporator in fact blames officials for this delay. The corporator Kamal Waghela, under whose jurisdiction Bhagirathpura falls, has confirmed that the file was kept unnecessarily pending for nearly 7 months, given the fact that we've already highlighted to you that first the file was prepared in November of 2024. What explains the delay? Let's try